Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 4b from chapter expansions. So starting with question number 7, if a plus 2b plus c is equal to 0, then show that a cube plus 8b cube plus c cube is equal to 6abc. We are given a plus 2b plus c equal to 0, so we'll write down the given first. Okay, so a plus 2b plus c is equal to 0. Now focus on to prove part. What we have to show? Cube. In to prove or to show part there is cube. So obviously we have to cube this. Now let's say I have cubed this. What we do? We'll put brackets cube and on the other side put brackets cube. Now students, do we know the whole cube of 3 terms? No, we don't know. So what we will do? We will shift one term on the other side. Okay, 3 terms ka whole cube I don't know. I don't know the formula for that. So over here I cannot cube this way. Okay, what I'll do is keep first 2 terms on one side and shift c on the other side. So plus c हो जाएगा minus c. Okay, so far it is okay. Okay, हम लोग ने shift कर दिया. अब हम लोग cube करते हैं. Now we'll cube it. So a plus 2b the whole cube is equal to minus c the whole cube. Now put brackets, cube it, put brackets, cube it. Okay, now a plus b the whole cube का फॉर्म है. Okay, so a plus b the whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, and another one is a cube plus 3ab bracket a plus b cube. I'll be using this one. Okay, in this case I'm using this second one. I've told you to remember both the formulae. Okay, it's okay even if you use this one. I'll show you कैसे solve करना even if you use this first formula, but I'll be using the second one. Okay, now तो ये हो जाएगा a square 3ab bracket a plus b cube. Okay, now over here a की जगह पे a ही है but b की जगह पे 2b है. So a cube plus 3ab, so 3 into a into 2b. b की जगह पे there is 2b. ब्रैकेट्स a प्लस बी, सो a प्लस 2b. जहाँ पे भी b दिख रहा है 2b सब्सटीट्यूट कर देना है. ठीक है, एंड a की जगह पे तो a ही है. नाउ b क्यूब दैट इज 2b, पुट ब्रैकेट्स क्यूब. प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट्स 2 को भी क्यूब करना है. ओके, नॉट जस्ट b, बिकॉज ओवर योर b इज 2b. ओके, सो होल थिंग को क्यूब करना है, कोएफिशिएंट को भी क्यूब करना है. इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब. सो सी का क्यूब सी क्यूब होता है, माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब इज नेगेटिव बिकॉज इट विल बी माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू माइनस सी. माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस. ओके, नाउ ए क्यूब प्लस मल्टीप्लाई द नंबर्स फर्स्ट. 3 2 ज़ा 6 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस 2b. 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब. ओके, alright. Now if you have not used this formula, then I'll show you what to do. Let's say you have used a cube plus 3a square b, so 3a square 2b into 2b plus 3ab square, so 3a into b square that is 2b का square, sorry square है, plus b cube that is 2b का cube. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीव देम एज इट इज. ओवर हियर मल्टीप्लाई द नंबर्स फर्स्ट, सो 6a स्क्वायर b हो जाएगा. ओके, प्लस 3a स्क्वायर द होल थिंग, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर.
plus this will become 8b cube. Okay, so a cube plus 6a square b plus 3 4s are 12 ab square plus 8b cube. Now over here we'll take common from middle two terms. Okay, we'll take 6 common ले सकते हैं. Okay, so 6 common ले लिया and ab common ले सकते हैं, so ab common ले लिया. In bracket you are left with a plus 2b, so a plus 2b. Eventually you will come to this step. Okay, so यहाँ पे 2-3 steps बढ़ जाता है. So whichever way you want to solve, you can directly apply this formula or use this formula. If you use this formula, 3 steps कम हो जाएगा. But if you want to use this formula, you find this easy, then you can solve it this way. Okay, so ये वाला किया है तो next step में यही आ जाएगा. Okay, now a plus 2b है. Students, we took a plus 2b equal to minus c. We shifted c on the other side. मतलब in short, a plus 2b is equal to minus c. So I can substitute minus c over here. Okay. So a cube plus 6ab, this will become minus c plus 8b cube is equal to minus c cube. Now look at the to prove part. सारे cubes एक जगह पे है. 6abc is on the right hand side. So over here we'll multiply this and shift this on the other side and shift c cube on the other side. Okay, a cube plus into minus gives minus 6abc plus 8b cube. I'll shift this plus c cube is equal to 0. यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, c cube तो शिफ्ट कर दिया. Now माइनस 6abc को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे प्रूव करना है वही फॉर्म में आ जाएगा. ओके, सो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू माइनस विल बिकम प्लस, सो 6abc. बॉक्स दिस. Let's read the next question. Question number 8. Use property to evaluate first part 13 cube plus minus 8 cube plus minus 5 cube. Second part 7 cube plus 3 cube plus minus 10 cube. Third part 9 cube minus 5 cube minus 4 cube. Fourth part 38 cube plus minus 26 cube plus minus 12 cube. We have to use property. What property? In question number 7, okay, we got a plus 2b plus c is equal to 0. This is what we were given. Okay, so that is if you add these three terms, it is equal to 0. Okay, we were not given the values. Over here it is in number form. Okay, so if you add these three terms, it is equal to 0, and we were supposed to prove a cube plus 8b cube plus c cube is equal to 6abc. Okay, so in short, a cube plus 8b cube plus c cube is equal to 3 into a into 2b into c. That is 3 times these numbers. Okay, 3 times these numbers. So if you take cubes of these numbers and add them, then it is equal to 3 times the number. Okay, this applies only if the addition of the 3 terms is equal to 0. If you look at the solved examples, then एक property prove किया है a plus b plus c is equal to 0. Okay, 2b की जगह पे b है to make it easy, and a cube plus b cube plus c cube, that is मैं तीनों का cube ले रही हूँ, then इसका cube is equal to 3abc. That is 3 times the numbers. Okay, so ये 3 times the variables है. Okay, so यहाँ पे a की जगह पे a है, b की जगह पे 2b है and c की जगह पे c है. Okay, so 2c होता तो into 2c करते. Okay, and यहाँ पे 8c cube हो जाता. So it can vary. Okay, but formula same है.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. सो सेम थिंग यहाँ पे है, b की जगह पे 2b है तो 2b का क्यूब 2 को क्यूब कर दिया 8 हो गया, एंड b की जगह पे 2b आ जाएगा. ओके, सो सेम थिंग विल अप्लाई ओवर हियर. तो ये भूल जाओ इफ़ यू आर फाइंडिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. ये वाला प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी सेम ही है. ओके, सेम ही प्रॉपर्टी है. ये एग्जाम्पल में दिया है, ये हम लोग ने प्रूव किया है. ओके, यहाँ पे b की जगह पे 2b है, c की जगह पे 2c हो सकता है, a की जगह पे 2a हो सकता है. ओके, अगर ऐसे होता तो 8a क्यूब हो जाता, 8c क्यूब हो जाता. ओके, इंटू 2a इंटू 2c. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24abc ये प्रूव करना होता. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स एंड द नंबर्स. So in short, if addition of 3 numbers is 0, then उनका cubes करके add करेंगे, then it is equal to 3 into those numbers, 3 numbers. Okay, so we'll use this property. All right, first part, 13 cube plus minus 8 cube plus minus 5 cube ये find करना है. Okay, now let us add these numbers first, not the cubes. Add these numbers first. a plus b plus c. So ये a है, ये b है, ये c है. Okay, so 13 plus minus 8 plus minus 5 क्या होता है? 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 हो जाएगा. सो इन शॉर्ट इट इज़ 13 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू, सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. So if I take cubes of these individual numbers and I add them, then it is equal to 3 into a into b into c. So 3 into 13 into minus 8 into minus 5. Don't forget the signs. Signs matter करता है ये केस में. क्यूब है, क्यूब में नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है. So signs matter a lot. Okay. So a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So we'll use that formula. Okay. So this is equal to 0. So we can write down therefore if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Okay, this is the property that we have proved. Okay, so a cube, a की जगह पे 13 है, b की जगह पे -8 है, c की जगह पे -5 है. सिंपल, सब जगह पे वही सब्सटीट्यूशन करना है. ओके, नाउ a cube, so that is nothing but 13 cube plus -8 cube plus -5 cube is equal to 3 into 13 into -8 into -5. ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो आंसर जो आएगा वो प्लस होगा बिकॉज दीज टू आर पॉजिटिव एंड योर माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस. 3 into 13 this gives 39. ओके, 8 5 ज़ा 40. सो 40 इंटू 39 मैं ज़ीरो साइड में रखती हूँ अभी के लिए. 39 इंटू 4 करके देखते हैं. 39 9 4 ज़ा 36. सो 3 4 ज़ा 12, 13 14 15 1 5 6 एंड 0 है. 40 है. 39 इंटू 4 नहीं है, 40 है. सो 1 5 6 0 पॉजिटिव. सो दिस इज द आंसर. इंडिविजुअल क्यूब्स लोगे देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके, so this is the reason we are using this property over here. Imagine you have to take cube of this number, cube of this number, cube of this number, then add all of them. उसमें भी there will be negative sign, negative sign. Okay, so instead of that, this property. So these are the reasons why we use identity. ठीक है, it becomes very much easy.
All right, so this is the property that we have to use. So please keep in mind a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc if a plus b plus c is equal to 0. Okay, now we'll come to the second part. All right, now in second part, 7 cube plus 3 cube plus minus 10 cube. Before using the property, I should make sure that a plus b plus c is equal to 0. So I'll check if 7 plus 3 plus minus 10 is equal to 0. Yes, it is 0. ये हम लोग ऐसे ही orally find out कर सकते हैं. Okay, but still you need to show the working. It is very very important. Okay, so a plus b plus c is equal to, this will give 10 plus minus 10. Open the brackets, plus into minus gives minus. Okay, पहले ये 10 आएगा फिर minus 10. Okay, so 0. Now a plus b plus c is equal to 0. So now I can use the property a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Okay, so I got this. So ये वाला लिखेंगे statement. I have already kept it as it is. तो ये statement लिखना पड़ेगा after this. We got this equal to 0. So if a plus b plus c is equal to 0, so then 7 cube plus 3 cube, this whole thing, plus minus 10 cube is equal to 3abc. So that is 3 into 7 into 3 into minus 10. Please don't forget minus sign. Okay, now 3 3s are 9. Okay, 9 7s are 63. 63 into 10, so that will give 630. But negative, positive into positive into positive, ये सब positive है यहाँ तक, but positive into negative will give negative. So this is negative minus 630. Okay, so this is the answer. Okay, so you have to write down. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. 7 cube plus 3 cube plus minus 10 cube is equal to minus 630. Okay, now coming to third part of the question. Now students observe, first and second part में there was positive sign. यहाँ पे in the property also we have a plus b plus c equal to 0. जो negative sign है that is inside the bracket. Okay, over here we have a cube minus b cube minus c cube का form. Okay, I want a cube plus b cube plus c cube का form. Okay, I don't want negative signs outside. So what I'll do, I'll take negative signs inside. Now pay attention, minus 5 है. Okay, minus 5 को I can write as plus minus 5. Plus into minus gives me minus, 5 will remain as it is. So I can write this like this. Even minus 4, I can write it as plus minus 4. Put brackets, सिर्फ brackets डाल दो, ठीक है? So I'll write these numbers in this form. जैसे यहाँ पे है वैसे मैं लिखूँगी. Okay? Now over here I need to find this. इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके, दैट इज आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 क्यूब प्लस minus 5 क्यूब प्लस minus 4 क्यूब. ये फाइंड करना है. नाउ यू कैन रिलेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. पॉजिटिव साइंस है. ओके, नेगेटिव नहीं है. ओके, सो नाउ इट इज रिलेटेबल. नाउ वील टेक a प्लस b प्लस c. लेट अस सी इफ इट इज 0. yes, 9 minus 5 minus 4, so it gives 0. so we need to write that down. But so 9 plus minus 5 plus minus 4 is equal to 9 plus into minus gives minus. Okay, and plus into minus gives minus. So 9 minus 9
negative 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 sign, and 5 plus 4 gives 9, 0. Okay, so yes, a plus b plus c is equal to 0. So if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now we'll find a cube plus b cube plus c cube. Now we can apply this property. Okay, so we have to find this. Okay, we have to find this. So 9 cube plus minus 5 cube plus minus 4 cube is equal to 3 into a into b into c. Okay, now ये दोनों पॉजिटिव है, 9 3s are 27. Okay, and these two are negative, but negative into negative gives positive. Okay, so 5 4s are 20, so plus 20 मिलेगा. मल्टीप्लाई करना है दोनों, ठीक है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है. So 9 3s are 27, 27 into 20, 27 2s are 54, and there is 0. Okay, so the answer will be positive. Okay, so 9 cube plus minus 5 cube plus minus 4 cube is equal to this. So after this, write down 9 cube minus 5 cube minus 4 cube is equal to 540. After this, you just write it down. Okay, fourth one, 38 cube plus minus 26 cube plus minus 12 cube. This one is easy, यहाँ पे कुछ simplify नहीं करना है, ठीक है. a cube plus b cube plus c cube का फॉर्म है. Okay, now first we need to find a plus b plus c. Okay, so a plus b plus c is equal to 38 plus into minus gives minus 26, plus into minus gives minus 12, 38 minus 38, so it is equal to 0. Okay, so a plus b plus c is equal to 0. If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Alright, so we'll use this property. We have to find a cube plus b cube plus c cube. So 38 cube plus minus 26 cube plus minus 12 cube is equal to 3 into 38 into minus 26. So whenever there is a negative sign, okay, negative number है, then put brackets. Okay, so it will avoid any confusion. ठीक है, this is just to avoid the confusion. Into minus 12, so I'll put brackets over here also. Now these are big numbers. Okay, so your working should be proper. Now this one is positive, this will give positive, positive into positive, positive हो जाएगा. यहाँ पे these two numbers are negative, negative into negative gives positive. Okay, so this is positive, this is positive, positive into positive gives positive. So answer will be positive in this case. Okay, now let us multiply 38 into 3. 3 8s are 24, 3 3s are 9, 10 11. Okay, now let us multiply these two. So 26 into 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 5 हो जाएगा ये. ठीक है, 0 6 2, so this gives 312, 312 into 114. So these are big numbers. ठीक है, so 312 into 114, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 0 2 1 3, 0 0, एक 0 बढ़ जाएगा, 2 1 3. So we get, okay, I've shifted this, थोड़ा shift हो गया, 8 6 5 5 3, 3 5 5 6 8.
Positive into positive, positive. Negative into negative gives positive. So positive into positive हो जाएगा. That is the answer is positive. Box the answer. Okay. You have to write down 38 cube plus minus 26 cube plus minus 12 cube is equal to 3, 5, 5, 6, 8.